Good morning. Just some day before your last record, last semester are over. In this last semester, I'm teaching, I think, BFS, Basic of Financial Services. From today, your second semester, your second semester of your syllabus are starting, and this is known as the second sem of Mumbai University under the your BMS portion system. In this syllabus, I teach you the two different number of syllabus are here. Number one, it's business environment and business environment. So what is the difference between environment and business environment? The main study is that. And second is and the second concept is industrial law. I think introduction of law maybe mostly madam taking in the last semester. From today we are study the industrial law. Okay, let's start the first lecture from today. It is business environment. Okay, in this study in this chapter we are studying the meaning and definition of business, then characteristics of business, aim and objective of economical and non-economical objectives, the types and form of business, summary and cohesion. This topic I converted fastly or taking the fastly because it is your OC, organizational commerce and management concept. I think so 11th and 12th, sole proprietor, partnership firm, then merits and demerits of sole proprietor, merits and demerits of partnership firm. All things you are studying 12th year because you have become 12th pass out. Somebody's are from science, there's no idea about that. Today I'm explaining you, just learn here, okay, and taking your idea. But in 12th, it is just moral study, diplomatical study for you know that what is business. Here, as per the legal and law, as per the SP, the combination of the studical material is here. It means briefly is here. If you want, then learn. If you become the college become offline, some practical knowledge is also provide there. Okay. You also know the business tycoons. You also know the business women, business entrepreneurs, etc. Okay. Let's start meaning and definition of business. You finally verify the goods available of the market. You buy, choose the goods as non-very requirement then. Do you know how this is buy? Come to market from production. The products and some specific place, the somebody bring these goods from the place to production and then distribute it to a wholesaler to distributor. The link is there. And this links goods and use them. Okay. Business may be defined as an activity involves regular production or purchase of goods services for sales, transfer and exchange with objective earning profit. In short, देखो उसने क्या बोला हुआ इस लाइन में, business may be defined as an activity involves regular production, यानी produce करेगा और purchase करेगा. It means the material for sale purchase of goods and services for sale. द एक्टिविटी ऐसा काम जिसके अंदर हम चीजें खरीद रहे या बना रहे फॉर नॉट योर सेल्फ यूज, रेडी फॉर द फर्दर पर्सन सेल, किसी और को बेचने के लिए. Business refer to the set of organization activity for production, exchange of goods and services. Business refers to the set of organizing activity, एक सेट पूरा, जैसे प्रोडक्शन करो,
देन प्रोडक्शन के बाद उसकी पैकिंग करो, देन मार्केटिंग करो, देन मार्केटिंग के बाद उसके ऑर्डर्स कलेक्ट करो एंड ऑर्डर्स के बाद उसको सेल करो. It is a sit, it's a link, and this link is not an activity, and this activity is known as business. Okay, then the business and policy essential are there. Which one? It is consist of only economic activity or non-economic activity or not include in it. क्या है? Business is economic activity, non-economic नहीं. It is welfare. The activity is done for only for wealth, money, and this money is generating by work. Okay, it is impulse buying and selling of goods and services with the objective to earning profit. Because profit है. ये second essential कहाँ से आया? From the first essential, it is consist economical activity. If economic money generating activity है, तो profit is compulsion is there. It is based on the exchange of commodity. Which one commodity? Two different commodity. It is raw material converted into finished good. Then finished goods converted into the exchange with money. Then money is converted into money is used for the purchase of raw material. The raw material converted into the link is there and the production cycle is there. The dealing of business and subject risks due to various environment factor. When we look around us, obviously the most of the people are engaged in various activity, teaching, teaching in school, farming works, field works, and working factories, driver, vehicles, bookkeeper, shopkeepers, sell goods, and doctor attend the patients, and so on. In this way, people busy during the day, sometime during the night out in the year. Now the question arises to why we are keep ourselves busy. The answer is satisfy the wants. Answer is satisfy. तुम्हें जो चाहिए वो खरीदना है, खरीदने के लिए मनी चाहिए और मनी किससे आने वाली फॉर वर्किंग busy activity and busy activity is your business. From that, the essential of number one, economical activity. Activity which as a perform with a objective to earning money as known as economic activity. For example, farmer grow crops to sell them and factory office employer work get wages on sale. The business person earn profit through the buying and selling of goods services. This activity in earning activity. In short, तुमने ये बात 12th में भी पढ़ी होंगी. Economic activity it means the money generating activity. Anything, any person, economics say all are labors from the top level to lower level. लेबर ही लेबर या जो वर्कर होता है उसको हम लेबर नहीं बोलेंगे, या जो सैलरी लेता है उसको हम ऑफिस पर्सन नहीं बोलेंगे. इकोनॉमिक्स से इफ द एनी पर्सन वर्क फॉर मनी फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ऑल पर्सन आर earning money and they are a labor. Labor it means the way of to money generator. They are the maybe farmer by farming, also labor work है, heavy work है, इसमें भी वो अपना पसीना गवा रहा है. Then factory और office employee for wages यानी और salary वो भी money generating हो रहा है and इसको भी labor ही बोलेंगे. It means the man, machine, material and machinery. 4M is there. The M is for man. And this man is any one person, salaried person, wages holder person, then sailor, then businessman, anyone earning for profit and all. कौन से वे से आ रहा है वो नहीं दिखा जा रहा है, मनी आ रही दिखी जा रही है. ओके, देन नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, activity which are not performed to earning money but get some satisfaction, it's called non-economic activity. This activity has performed discharge social obligations or physical fitness or for reaction, people visiting place workshop providing reliefs to victim of flood, earthquake, emergency, etc. दिस टाइम पे हम कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे या कोई सेलिंग एक्टिविटी नहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इज नोन एज नॉट अ बिजनेस बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन देयर. देन व्हाट इज बिजनेस? The business refers to the occupation which goods and services are produced and sold return to money. What is profession? Then profession is may not be explained in every field, so we are required to service other to specialize in one field or
other. For example, you need service to a doctor to you visiting into for treatment, lawyer for legal support. They all engage in profession. The two different way are there. Businessman, how can you become a businessman? Any special profession is there? No. But for profession, your special study is there. Professional study is there. It is the different. Okay. बिझनेसमॅन बनण्यासाठी तुम्ही किती शिकलोय, तुम्ही MBA केलंय का, कोणी बघणार नाहीये. तुमचा धंदा आहे, तुमचं कॅपिटल कसं सांभाळायचं तुम्ही बघा. But time of profession, you have to become knowledgeable. You have to know the all thing is there. Then employment. Employment refers to an occupation which is the person works regular for another to get wages and salary in return. Government service, company, executive bank office salary, factory worker are said to be employment in the certain terms. In condition regarding work to perform, an employer or work for some selected monthly salary, amount of wages, salary, facility is an employee there. Then characteristics of business. What are the characteristics of business? The first is deal in goods and services. People in business are engaged in the production and distribution of goods and services. The goods make consumer good like bread, butter, milk, tea, etc. डील्स एंड गुड्स एंड सर्विस, हम ये चीज़ें लेते हैं एंड वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, और उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं. देन उस चीज़ों का हम फिर से बेचेंगे तो हमें क्या मिलने वाले, मनी मिलने वाले. इट इज द गुड्स एंड सर्विसेज डीलिंग. ओके. देन सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके बाद डील होने के बाद सेकंड क्या होता है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ अ पर्सन प्रोड्यूस एंड बाय द प्रोडक्ट, sell for consumption, or if in gifting into the another, it is engage in business. But when the production is buying the goods and selling to somebody, he is engaging in business. Thus, the business they took service between the buyer and seller. Okay? In short, मैंने अभी बोला था कि हम क्या करते हैं, चीज खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, बाद में हम चाहे तो बेच सकते हैं on time of money return to us. Okay? Regular exchange of goods and services. यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है. The production, buying, selling activity must be carried out in regular business. Normally, is isolated transaction not treated as a business. For example, Raju sold his old car to Hari. Is not a considered a business unless they continue to the carry this buying to selling a car are regulated to business. Are you getting? देखो बताता हूँ, कोई अचानक अगर कोई असेट बेच रहा है कि उसका अभी यूज नहीं है, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते. लेकिन उस असेट्स जो बेच रहा है उसकी उसने शोरूम डाल दिया और हर रोज वही काम हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कहीं से कोई ऐसी चीज आ गई जो ओवर ओवर क्वांटिटी है, देन यू सेल टू योर नेबर एट लो कॉस्ट. तो रोज बेचते हैं क्या वो चीज? नहीं. इट इज नॉट अ सेलिंग एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ बिजनेस. इट इज जस्ट कि तुम्हारे पास ज्यादा था, वेस्ट होने से अच्छा बेच दिया जाए. Then the next point is require investment. Every business activity requires some amount of investment in terms of land, labor, and capital. These are the resources utilized in products, very goods and services. इन्वेस्टमेंट किस में होता है? देखो यहाँ पे जगह होनी चाहिए खुद की, जहाँ पे प्लांट लगा सके, लेबर्स एंड अ पर्सन वर्क इन बिजनेस, एंड कैपिटल एंड अन इन्वेस्टमेंट मनी फॉर एम्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इनका एम क्या होता है? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, प्रोड्यूस, सेल एंड अर्न प्रॉफिट. Business activities are performed with the primary object earning income by way of profit. Without profit, it is not possible to survive for long period. Earning or profit also required. Okay, involves risk and uncertainty. Risk क्या होता है? To taking loss. जितना बड़ा रिस्क किया जाएगा उतना बड़ा बिजनेस होगा. Business who invest the various resources expecting the fair amount of return, but in spite of his and her best effort to reward, he is getting always unsuccessful. Sometimes enjoy profit, and also time may come when he are the suffering having losses. Okay. Then the next point we are starting, aim and objective of business. Okay. The economic objective. What are the economic objective? Economic objective of the business refer to the objective earning profit, and also the objective that necessary to preserve the achieve of the objective profit object. Then profit earning. What is a profit earning? Profit earning is the life.
bold of business without, and we know business can be compared with market, the profit making in the primary objective for which a business unit is both into existing. Profit helps businessmen not only on their living but also explaining the activity of your their business activity by reasoning a part of the profit. Creation of courses, creation of customer. A business unit cannot be survive unless are the customer to buy the product and service. Against the businessman can be earn profit only when he and she provide quality goods and services. The resources price for the needs to attract more customer for its existing as well as the new product of this achievement with help of various marketing एक्टिविटी. क्या होता है कि बिजनेस इस सर्टेनिटी में हमें क्या करना होता है कि कस्टमर को हमसे अट्रैक्ट करके रखना होता है एंड दिस अट्रैक्शन इज द मार्केटिंग एक्टिविटी. अब उसके लिए तुम बेस्ट ऑफर जनरेट करो, सम पॉलिसीज बनाओ, गुड सर्विसेज दो, एंड फॉर दिस द नीड्स आर अट्रैक्ट टू द मोर कस्टमर एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज. क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर तुम्हारे पास आया है और तुम्हारी प्रेजेंटेशन से खुश है, देन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को भी एडवाइस करेगा टू विजिट देयर एट दिस पर्सन में, कि तुम्हें जाना है और वो करना है, तुम्हें जाना है और वो करना है, करके लेना है. ओके, देन उधर ही लेना है. इट मीन्स टू नंबर ऑफ मार्केट शॉप, सिमिलर शॉप इज देयर इन योर एरिया, और तुमने तुम्हारे दोस्त से पूछा कि मुझे मोबाइल फोन लेना है, कहाँ से लूँ, then he directly say कि this one is best. The reason is he is the lawyer, customer oriented, and that वो अपने बिजनेस में अच्छा है और कस्टमर ओरिएंटेड है. उसने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया होगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज continuous innovation. Business is highly dynamic and entrepreneurs can be continuous to be successfully only adopting itself change in its environment. Innovation means change which bring about improvement in production, process, production, distribution, goods and services. Reduction in cost, increase in sale. या इनोवेशन यानी क्या बोलूँ मैं, रिसर्च, कुछ नया नया सोचना, और उस सोच में क्या क्या होना चाहिए कि इनोवेशन होने चाहिए. कौन कौन सी इनोवेशन होनी चाहिए? मेरे प्रोडक्शन में कितना चेंज आए, प्रोसेस कैसे चेंज करूँ कि स्क्रैप कम हो, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिंक है वो कैसे रिड्यूस करूँ कि रेट कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम हो, देन कॉस्ट सेल ज़्यादा बढ़े, प्रॉफिट कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में मैं कैसा रहूँ एट लो कॉस्ट सेलिंग. इट्स नोन एज बिजनेसमैन आइडियाज. इट्स नोन एज कंटिन्यूस इनोवेशन वर्क, और ये कंटिन्यूली हमें करना है. देन बेस्ट पॉसिबल यूज रिसोर्सेज. As you know, the run any business, you must have sufficient capital to fund. The amount of capital may be used to buy machinery and raw material to employment, man, and the मैंने पहले ही बोला था 4M is there: man, machine, material, and money. Man, machine, material, and these four are the resources of your business. You can take mixed idea, and this idea is known as here work. And this idea is only known as use of man, use of material, use of money, and use of machine. कि तुम मैन कैसे इस्तेमाल करते हो, लेबर को कैसे यूज करते हो, तुम मटेरियल कैसे इस्तेमाल करते हो, तुम मनी को कैसे यूज करते हो, तुम्हारे पास मशीनरी है उसको कितने टाइम यूज करते हो, उसकी कैसे मेंटेनेंस रखते हो, एक्सेट्रा. इट इज द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. Then social objective of business. The social objective are those objective to business which are achieved to benefit to the society. The business should aim to give any kind of, फर्स्ट इज क्या, प्रोडक्शन एंड सप्लाई क्वालिटी गुड्स टू सर्विसेज. पूरे सोसाइटी में हमें जो प्रोड्यूस करना है ऑल ओवर, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर सबको यकसा मिलना चाहिए, सिमिलर मिलना चाहिए.
Since the business utilize the various resources to society, the society expect to get quality goods and services from the business. The objective of business should be produce the better quality goods and supply them at the right time, and it's the right price. They should change at the price according to the quality of goods and services. Then adoption of fair trade and practice. हमें कैसे करना चाहिए? फेयर ट्रेड करना चाहिए. फेयर यानी परफेक्ट, अच्छा. किसी को धोखा नहीं देना कि ये मेरा फ्रेंड है उसको सस्ते में दे दिया, ये मेरा दुश्मन है इसको डबल कॉस्ट. नो, द फेयर एक्टिविटी इज देयर. In every society, activities such as holding, black marketing, overcharging is considered understandable and disinterested, misleading. Our advisement often the given the false information about the quality of product. The business unit must not create artificial secrecy of essential goods or rise to price for the sake of earning more profit. Are you getting? मैंने बोला उसको शॉर्ट में उसने एक्सप्लेन किया. Then continues to the general welfare to the society. Businessmen unit should work for the general welfare and upliftment of the society. This is possible through the running of school and colleges in better education, opening of established hospital or medical facility to providing. It means क्या करना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है उसका सम हिस्सा इट्स नोन एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें किस वेलफेयर के लिए देना चाहिए? एस्टैब्लिश स्कूल कॉलेजेस एज वेल एज हॉस्पिटल्स, बिकॉज ये वेलफेयर की पार्ट्स है. जिससे ज्यादा वेलफेयर होने वाला है, वेल एजुकेशन पर्सन रहा तो बाद में उन्हीं के फायदा है कि उन्हें वेल लेबर स्किल लेबर मिलेगा. अगर हेल्दी पर्सन रहा तो health is depend on the life of goods. Okay. Then human activity objective. Human, it means the you. Human activity, objective refers to the objective aim as well the being as well as fulfillment of expecting of employment as also people who are disabled, handicapped, deprivative and proper education time. The human objective of the business may thus including economic well-being, employees, social and psychological satisfaction, employees and development of human resources. It is economic well-being the employee. लोगों के लिए क्या होना चाहिए? जैसे सोसाइटी के लिए बोले, अब एक एक इंडिविजुअल इंसान के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले उसको काम मिलना चाहिए. अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन डाल रहे हो तो उसको क्या मिलना चाहिए? काम. इसी को उसने बोला इकोनॉमिक वेल, यानी उसका पैसा बनना चाहिए बीइंग एज ए एम्प्लॉय. Being business employee must be the provide with fair remuneration, incentives, and performs benefit of providing fund, pension and other remuneration. Like उसे हर तरह की वो फैसिलिटी मिलना चाहिए कि उसको फील हो कि काम कर सकता है. Then social and psychological satisfaction of employee. The duty. It is the duty of business unit to provide the social and psychological satisfaction to their employee. This possibility by make the job intensive and challenging, putting their rights person in the right job, reducing the monotony of work. Further, the given employees should be give promote attendance attention in their suggestions should be considered seriously when decisions are made. If employee are happy and satisfied, it means जो सोशल वेलफेयर है और साइकोलॉजिकल वेलफेयर है, इन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन कवर अप या कंटिन्यूसली होना चाहिए. ये ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय तुमसे सेटिस्फाई होना चाहिए. तुम जस्ट सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए नहीं करना है, तुम्हें ऐसे अर्निंग प्रॉफिट करनी है कि इनको भी अच्छी सैलरी मिले. दोनों तरफ जाना है और दोनों को ऐसे कंसिस्ट करना है कि तो वर्क इज बिकम बेस्ट. देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है. इट मीन्स द यू, तुम्हें अच्छा सीख के वहां जाना है और उसके लिए अच्छी प्रोसेस करना है. तो ये डेवलपमेंट बिकम स्किल, सेमी स्किल एंड नॉन स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज. अब नॉन स्किल है तो उसको इतना काम सिखाओ कि उस मिनिमम सेमी स्किल पे आ जाए. और सेमी स्किल इज बिकम डेवलप लाइक स्किल पर्सन, यानी उनकी जो स्किल है उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी रेम्यूनरेशन को इंक्रीज करना चाहिए. Employees are the human being always been want to grow the professionally. The growth of requirement for proper training as well as the development business can be proposed to people employment, improve their skill and development ability and compensate the course time.
well-being of society and economic background backward people. Business unit being the inseparable part of the society should help background class and also the people those are physically and mentally challenged. This can be done in the many way. For instance, vocational training program may be the arrange improve the earning capacity to background people and community. Okay. Then the next point is national objectives. क्या है देखो national objective? द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पूरे नेशन में हमें ऐसा बिजनेस डालना है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है बिकम एम्प्लॉयड. द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस. हमें सबके साथ सोशल जस्टिस करना है. हायर लेवल गुड्स, सुपेरियर गुड्स ऐसे नहीं बनाना है सिर्फ हम अमीरों के लिए बनाएंगे या सिर्फ गरीबों के लिए लो क्वालिटी गुड्स बनाए. एवरेज गुड्स बनाना है जो बोथ आर यूज इजीली. ओके. द प्रोडक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू नेशन प्रायोरिटी. प्रोडक्शन किसके हिसाब से करना है? नेशन प्रायोरिटी की नेशन लॉज जो अपने लीडीज है नेशनलिटी को प्रमोट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हमें प्रोडक्शन करना है जिस उसके अंदर भी तुम्हारा जैसे क्या बोलते हैं जातिवाद वगैरह नहीं आना चाहिए. द नेशनलिटी business should be produced any supply goods according with the priority leads down to plans and policy to government. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से है. तुम्हारे पर्सनल एम्स को पकड़ के नहीं बनाना है किसी चीज को. कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू इन द कंट्री. देन तुम्हें टैक्सेस पे करने हैं जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो गवर्नमेंट का एंड दिस टैक्सेस का यूज डेवलपमेंट के लिए. सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है एंड इस प्रमोशन के ऊपर बात करनी है. Let's stop here in next point. Next lecture we started um, disadvantage of business. Okay. Thank you all of you.